Hello everyone and welcome back to my playlist of biochemistry which we are doing from Satya Narayana. Chapter number 17 आज start कर रहे हैं. Very important chapter which deals with metabolism of nucleotides. You know आपकी body में सारा जो गेम है वो फिट है DNA के सीक्वेंस के अंदर and obviously DNA codes for RNA. So what these molecules are made up of are nucleic acids, यानी DNA में अपने nucleic acids हैं, RNA में अपने nucleic acids हैं, and the building block kind of you can say कि DNA और RNA का building block nucleotide है. So we do this a lot in biochemistry कि purines अलग तरह की पूरा बॉल गेम है and then we have pyrimidines. तो ये जो nucleotides हैं we will talk about their metabolism in detail in this particular chapter. So metabolism की जब हम बात करते हैं तो we will talk about synthesis कि आपकी बॉडी में ये बनते कैसे हैं, which is the topic of today's video कि how purines are synthesized. Then we will obviously talk about कि इनकी degradation कैसे होती है और फिर बहुत important topic है कि इनके साथ associated कुछ important diseases हैं. तो ये तीनों हेडिंग्स हमने कवर करनी है फॉर प्यूरिन्स भी और फॉर पायरिमिडीन्स भी. तो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है. ओके, पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लेते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस और उसमें फिर साथ में तीन चीज़ों का ये मिक्सचर आपको पता ही है ना न्यूक्लियोटाइड की. देयर इज नाइट्रोजनस बेस, देयर इज अ पेंटोज शुगर एंड देयर इज अ फॉस्फेट मोइटी. ये तीनों मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड. जो पेंटोज शुगर है वो डी राइबोज है इन आरएनए और डी ऑक्सी राइबोज है इन व्हाट वी कॉल द डीएनए. सो वी नो कि डी ऑक्सी राइबोज कब होगा और राइबोज कब होगा. सो इफ इट इज ओनली आरएनए देन इज द राइबोज शुगर एंड इफ इट इज डीएनए इट स्टैंड्स फॉर दिस ना डीएनए. सो डी इज फॉर डी ऑक्सी, राइट. ये बेसिक बात तो आपको पता ही है. They are the structural component of nucleic acids, DNA and RNA. Also in certain coenzymes, they are involved in a lot of metabolic chemical reactions. ये वाली बात अक्सर लोगों को भूल जाती है. कभी उनसे पूछोगे न्यूक्लिक एसिड्स बॉडी में क्या होते हैं, दो ही चीज़ बताते हैं हमेशा कि दे आर प्रेजेंट इन DNA, दे आर प्रेजेंट इन RNA, बट बॉस दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कोएंजाइम्स. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. तो अब आइए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया चैप्टर का कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि प्यूरिन भी कवर करना है और पायरिमिडीन भी कवर करना है इस चैप्टर में. और कवरिंग का तरीका ये होगा कि सिंथेसिस पे बात करेंगे, डिग्रेडेशन पे बात करेंगे और डिजीजेस पे बात करेंगे. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो बात शुरू करते हैं. मेनी कंपाउंड्स कंट्रीब्यूट टू प्यूरिन रिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. सो अगर हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर की बात करें सो there are several compounds which contribute. और आप देख रहे हैं कि ग्लाइसिन से कुछ कंपोनेंट आ रहा है. ये बेसिकली सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज द प्यूरिन रिंग. और इस प्यूरिन रिंग में कुछ खट्टे मीठे कलर, वो मैं हमेशा कहता हूँ गोला गंडा कलर बनाए हुए हैं, बट दैट्स अ वेरी गुड डायग्राम क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि जो नाइट्रोजन्स ने आना है टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्यूरिन रिंग. You see there is a six hexagonal type of ring, six shaped, six sided ring and then there is a pentagonal ring. तो जो नाइट्रोजन contribute हो रहा है, two nitrogens in the hexagonal ring are coming from aspartate and one nitrogen in the hexagonal as well as in the pentagonal ring. They are coming from glutamine. So not technically nitrogen itself but the bonds here. So we'll see how this detail goes on. And then the third compound is the glycine. So glycine is then contributing to these bonds. So ये जो color coding है that's important for you to understand कि glycine क्या contribute कर रहा है, glutamine क्या contribute कर रहा है और aspartate क्या contribute कर रहा है. ठीक है. So N1 of the purine is derived from amino group of aspartate. So N1, this year numbering अगर आप देखें 1 2 3 4 5 and 6 and 7 8 9. So N1 is coming from aspartate. C2, carbon number 2 and carbon number 8, they come from tetrahydrofolate का N10 formyl group. So that's coming ये C8 की हम यहाँ बात कर रहे हैं. So that's the formyl tetrahydrofolate. So contributions are important. ये एग्जाम में अक्सर पूछते भी हैं. फिर नाइट्रोजन नंबर 3 and 9 are obtained from amino group of glutamine, carbon 4 5 and N7 from glycine and C6 directly comes from carbon dioxide. So that's an important thing for you to remember. Very important diagram I would say. Okay, so at the very outset आपको पता है कि at least चार चीजें हैं
जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बल्कि 5 जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन रिंग। फिर अभी जो हम पूरा सिंथेसिस का पाथवे देखेंगे, पूरा साइकिल ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन देखेंगे, उसमें विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेप्स ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उन 5 चीज़ों के नाम बताओ जो प्यूरिन में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज द एस्पार्टेट, देन यू मस्ट नो ग्लूटामीन, then glycine, then formyl THF, and this is number 4, and then carbon dioxide is number 5. So purine is contributed by 5 things. Okay, पांच हम 5 एक आता था एक जमाने में इंडिया में ड्रामा, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, आई डोंट नो, जी से आता था, सोनी से आता था, बट एनीवेज हम 5 आता था एक। सो 5 इज फ्रॉम P and P is for purine. So 5 things are contributing to purines. Okay, remember hum 5. Now it could be remembered that purine bases are not synthesized as such. They are formed as ribonucleotides. The purines are built upon a pre-existing ribose 5-phosphate. It's an important point. So that's the starting molecule. Liver is the major site for purine synthesis. Erythrocytes, polymorphonuclear leukocytes, and brain cannot produce purines. It's a very, very important point. कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता. Okay. Now, this is a complicated looking table which gives you a flavor of what are the steps of purine synthesis. So, if you start from here, this is what we have got at the initiating molecule. ये है हमारे पास ribose 5-phosphate. और अगर आप ये text याद है कि जो पूरा purine बनता है, it needs a ribose 5-phosphate to begin with. So the initial compound is the ribose 5-phosphate, which is converted into this compound, which is a 5-phosphoribosyl pyrophosphate. You see, there will be addition of groups and things will just continue changing. अब पिक्चर में ग्लूटामीन आएगा और ग्लूटामीन से ये नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट हो जाएगा. Remember the first picture? ग्लूटामीन से एक नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट हुआ था. So here glutamine is donating its nitrogen. The compound now has a different name. Then glycine comes into the picture and gives this blue thing. You see, things are building up. ये basic compound कौन सा था? Basic compound was this compound. इस कंपाउंड में अब चीजें ऐड होती जाएंगी. दिस कंपाउंड इज राइबोस 5-phosphate. इसमें पहले देयर इज पायरोफॉस्फेट ग्रुप एडिशन, ये ग्रुप पूरा ऐड हुआ है. देन glutamine is contributing nitro group, nitrogen amino group. Then glycine is contributing its bit, and then see what happens. 10-formyl THF comes into the picture, and it starts giving off further these black things. क्योंकि ये N कहाँ से आया था? ये N आया था that came from you remember glutamine. ये blue bits कहाँ से आए थे? They came from glycine. अब ये कार्बन और ऑक्सीजन. So imagine this one. यहाँ पर अब ये चीज अटैच हो गई है. So इस नाइट्रोजन के साथ what is attached is this CH group. ये देखें, ये CH group लग गया, and between the CH and this nitrogen which is pink in color, there is an oxygen bond, और फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं. तो मेरा रिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन ये रिंग यहाँ सही से बना हुआ. अच्छा, एक तो ये यहाँ रिंग जनरेट हो गया. ये सारी चीज मैं बार बार ड्रॉ करूं या इसकी जगह सिंपल ये लिख दूं राइबोस 5-phosphate, तो बात अब इजीली कन्वे हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है कि जो राइबोस 5-phosphate है उस पर अब एक रिंग बन चुका है, और ये रिंग जो है इट्स अ 6-sided रिंग, सो इट्स अ हेक्सागोनल रिंग. लेकिन अभी कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज यू रिमेंबर प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें देयर इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, देन देयर इज अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर व्हिच इज डन. नाउ आफ्टर दिस what happens is this step. Now glutamine starts contributing few more things. अभी glutamine की कहानी खत्म नहीं हुई. So you see there is this one. ये happily रह रहा था. अगर मैं इसको हटा दूं, if I just remove this, that's a happy living hexagonal ring. लेकिन ग्लूटामीन को कहाँ चयन है? ग्लूटामीन ने अभी मजीद हाइड्रोजन देना दे दिया, और ये राइबोस फॉस्फेट पर ये बिल्डअप होता जा रहा है. Then further चेंजेस होते जाएंगे एंड यू स्टार्ट सीइंग, यू सी कार्बन डाइऑक्साइड ये बिट कंट्रीब्यूट करेगा, देन एस्पार्टेट, एंड दिस होल बिट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड. ऑब्वियसली ये एक पूरा मुश्किल बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे नाम हैं जो आपने याद रखने हैं. बट द पॉइंट इज कि ये सारे नाम स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे याद ना हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किस तरह से वी आर बिगिनिंग विद राइबोस 5-phosphate और फिर उस पर चीज़ें ऐड होती जा रही हैं.
ऑब्वियसली आपको ये टाइम लगाना पड़ेगा सारे नाम याद रखने के लिए. देर कॉम्प्लिकेटेड नेम्स. फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर फॉर्माइल, ग्लाइसिन, अमीडीन, राइबोसिल 5 फॉस्फेट. अ डिफिकल्ट नेम. आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद दिस, बट आपको पहले आपको आई मीन हाउ यू रिमेंबर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. यू फर्स्ट हैव एन ओवरव्यू, देन यू डाइव डीपर, और फिर जब डाइव डीपर करते हैं तो टाइम देते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर अपनी इनिशियल जो जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग आपने बनाई होती है उस पर बिल्ड अपॉन करते हैं चीज़ों को. तो यहाँ भी ऐसे ही टाइम देना पड़ेगा, नाम सारे याद करने पड़ेंगे बॉस. And then so things keep on adding. THF comes again, contributes some again these black thingy, and then another ring is formed. You see, so ribose phosphate पर अब ये double ring attach हो गया. One is a 6-sided ring, one is a 5-sided ring, and this compound is called inosine monophosphate. So that's the end product of the whole metabolic pathway. ठीक है. अब ये जो पूरा pathway है, यही जो मैंने यहाँ दिखाया आपको डायग्राम पर, ये पूरा टेक्स्ट में लिखा हुआ है. ये देखते हैं इसको क्विकली. The pathway which starts with ribose 5-phosphate, initiating compound याद रखना है आपने, देखें इसको नहीं भूलना. That is the back of the whole metabolic pathway. इसी पर पूरा प्यूरिन का रिंग बना है. सो यानी एंड में जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, इसी पर 6 कार्बन रिंग अटैच्ड है और साथ में उसके 5 कार्बन रिंग अटैच्ड है. ठीक है. तो स्टोरी इज लाइक दिस. रिमेंबर, यू डोंट हैव टू फॉरगेट द बेस लाइन, द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ ये जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, द पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ इनोसिन मोनोफॉस्फेट, IMP इसको हम शॉर्ट में कहते रहेंगे, या इनोसिनिक एसिड. दिस इज लेस नोन नेम. IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, इज द मोर जनरलाइज नेम जो भी पता भी होता है स्टूडेंट्स को. दैट इज द पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. ये सबसे पहले यही बनता है, फिर इससे आगे प्यूरिन्स ड्राइव होते हैं, और इनके सारे रिएक्शंस यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाए थे वो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से शुरू हो रहे हैं. राइबोस 5 फॉस्फेट इज अच्छा, ये खुद कहाँ से आता है? ये किसी ने अगर अभी तक अपने जहन में नहीं सोचा तो अब ये सवाल आपको करना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा प्यूरिन सिंथेसिस स्टार्ट होता है फ्रॉम राइबोस 5 फॉस्फेट. तो राइबोस फॉस्फेट भी तो कहीं से आता होगा. यस, इट कम्स फ्रॉम द HMP शंट. ठीक है. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? Ribose 5-phosphate produced in the hexose monophosphate shunt of the carbohydrate metabolism is the starting material for purine synthesis. It reacts with ATP to form PRPP. फिर glutamine transfers its amide nitrogen to the PRPP to replace the pyrophosphate and produce 5-phosphoribosyl amine. अब चीजें होती जाएंगी और आगे मामला चलता जाएगा. ठीक है. This reaction is the committed step in purine nucleotide biosynthesis, the main step. Okay. If this happens, then IMP will be forming for sure. Then phosphoribosyl amine reacts with glycine in the presence of ATP to form glycinamide, and then things keep on adding. N10 formyl tetrahydrofolate, and then glutamine comes in. Imidazole ring ban jata hai start mein. So all these are the steps which we just discussed in the diagram. Okay. Now, the final reaction, which is catalyzed by the cyclohydrolase, leads to ring closure with an elimination of a water molecule. The obtained compound is known as IMP. So we just had a look at this in the flow chart. Okay. Now, this reaction can be inhibited by a few things. Inhibitors of purine synthesis. Folic acid is the essential molecule for synthesis of purine nucleotides. Sulfonamides are structural analogs of aminobenzoic acid. These sulfur drugs can be used to inhibit the synthesis of folic acid by microorganisms. So this indirectly reduces the synthesis of purine because folic acid and tetrahydrofolate के levels कम हो जाएंगे. And these are the important molecules you know for contribution of parts of the purine ring. So if somebody has used these drugs, sulfonamides, then it is expected that purine synthesis will be reduced. Okay. So this indirectly reduces the synthesis of purine and therefore the nucleic acids, DNA and RNA. Sulfonamides have no influence on human since folic acid is not synthesized and supplied through the diet. So all that we discussed here was for microorganisms, right? The structural analogs of folic acid such as methotrexate are widely used to control cancer. They inhibit the synthesis of purine nucleotide and thus nucleic acids. Both these reactions are concerned with the transfer of one carbon moiety. These inhibitors also affect the proliferation of normal growing cells because the normal growing cells will need purines for their proliferation. And if you're using this particular drug, things are going to be screwed. This may cause side effects such as anemia, baldness, scaly skin. So you notice all those cells which require
multiple rounds of proliferation, they are screwed, they are disturbed, right? So remember the important association of two important drugs which are clinically very well prescribed, sulfonamides and methotrexate. Okay, both of them are basically associated with the stuff which is what we call the folic acid stuff. Okay, so again, if we go back to the original diagram, you must know what are the contributing molecules to purine synthesis: glycine, aspartate, folic acid से आने वाला tetrahydrofolate and glutamine, also carbon dioxide. टेट्राहाइड्रोफोलेट ही के पाथवे पर दो ड्रग्स ने काम करना है, सल्फर ड्रग्स एंड द मेथोट्रेक्सेट. ओके, सो लेट्स कैरी ऑन आवर डिस्कशन टू नाउ सिंथेसिस ऑफ AMP एंड GMP फ्रॉम. सो IMP बन गया था. पूरा पाथवे जो था वो अब तक की स्टोरी ये है कि we began with ribose 5-phosphate and after a long list of complicated reactions we get IMP. Now अब इससे obviously purines तो बनने हैं ना, इससे adenosine और guanosine, so AMP monophosphate है ये obviously, and GMP ये molecules बनने from IMP. So inosine monophosphate is the immediate precursor for AMP and GMP, which are the real purines if you like. Aspartate condenses with IMP in the presence of GTP to produce the adenyl succinate, which cleaves and forms the AMP. So overall ये story याद रखनी है कि from IMP, GMP and AMP are produced. Okay, if you want to remember the exact chemical reactions, here they are. Now, 6-mercaptolurine is an inhibitor of synthesis of AMP and GMP. It acts on the enzyme adenylyl succinase of AMP pathway and IMP dehydrogenase of GMP pathway. So, आपको drug again पता होना चाहिए किस जगह पे act कर रही है. So, if 6-mercaptolurine is there, it blocks this pathway. So, IMP will be produced fine, but these two babies will not be produced. So, AMP and GMP will be disturbed, right? So, if you look at this diagram, you see that conversion of nucleoside monophosphates and to diphosphate and triphosphates, that's simply the addition of ATP से phosphate group आता जा रहा है. So जो AMP और GMP बने हैं, they are then further converted into ATP and GTP. Okay. Now, formation of purine nucleosides, diphosphates and triphosphates. What is all summarized in this particular picture? So the nucleoside monophosphate was then. So again, remember the whole bigger pathway. We started with ribose 5-phosphate. It gets converted into inosine monophosphate, which then converts into AMP and GMP, or AMP or GMP can be converted into ATP and GTP. Simple stuff. Okay. Now, salvage pathway for purines, very important. The free purines are formed in the normal turnover of nucleic acids and also obtained from the dietary sources. So free purine मिलता है हमें इस तरह से कि जब cells में turnover हो रहा है, so we get purines. The purines can be directly converted into the corresponding nucleotide, and this process is then known as the salvage pathway. So we are not synthesizing them in this pathway. We are getting like ready-made type की चीज. आप खाना घर में बनाएं तो उसमें पूरा प्रोसेस लगता है ना, प्याज कटेगी, टमाटर कटेगा, आलू कट रहा है, सब्जी कट रही है, फिर खाना बन रहा है, या आप बाहर होटल से डायरेक्ट खाना लेकर के आ जाएं. सो दैट डायरेक्ट वाला थिंग इज द salvage pathway. अब ये पूरी डायग्राम है which shows you the salvage pathway. If you look here, the salvage pathway of purine nucleotide synthesis, and you see you are getting AMP, you are getting GMP, you are getting IMP, all from metabolism of different things. So adenine turnover gives you this and all. So remember, if you want to, but the मोटी बात understand होनी चाहिए कि यहाँ आप synthesize नहीं कर रहे, but what you are getting is the end product directly. And a very important compound involved here is, और उससे बहुत सारी diseases फिर associated हैं, that is the HGPRT. When we say HGPRT, that means hypoxanthine H, guanine G, phospho P, ribosyl R, transferase T. That's involved for GMP production as well as IMP production. Okay, right. Then the salvage pathway is particularly important in certain tissues such as erythrocyte. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जो erythrocytes हैं वो अपना प्यूरिन नहीं बना सकते. So de novo synthesis, यानी synthesis of new purines does not happen, and if does not happen, they have to have some mechanism of getting purines, you know. So and that mechanism is by salvage pathway, because ATP नहीं बनेगा ना, वरना सारा मसला. A defect in HGPRT causes
लीच-नेहान सिंड्रोम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डिजीजेस की वीडियो डिस्कस करेंगे. Now, regulation of the purine nucleotide biosynthesis. The purine nucleotide synthesis is well coordinated to meet the cellular demands, and this is just like other reactions in the body. If you need the reaction happens. If you need a hormone, the hormone comes. That's the normal physiology. Okay. The intracellular concentration of PRPP, that's an important regulatory molecule. It regulates purine synthesis to a large extent. This in turn is dependent on the availability of the 5-ribose phosphate and the PRP synthetase. So if you go back into the reaction cycle, very early on, this PRPP is formed. So that PRPP is formed very early on, and that depends upon कितना ribose phosphate मौजूद है और कितना ये enzyme मौजूद है. So that is kind of the major controlling event for the synthesis of purines. Okay. Now PRP, P-glutamyl amidotransferase is controlled by feedback mechanism. So that is, if AMP and GMP are available in the adequate amount within the cell, then the reaction is inhibited, and that should make sense to you. कोई चीज़ अगर already ज़्यादा मौजूद है तो वो मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Now, conversion of ribonucleotides to deoxyribonucleotides. Synthesis of purine and pyrimidine. Deoxyribonucleotides occur from ribonucleotides by reduction. So ये जो particular heading है, that we will come, I think we'll come back to this जब हम प्यूरिन और पायरिमिडीन्स की सारी मेटाबॉलिज्म कर लेंगे, तब वी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर हेडिंग. सो अभी हमको पूरा ओवरऑल पिक्चर पता नहीं है. सो लेट अस फर्स्ट कवर प्यूरिन सिंथेसिस. आज हमने बात की है, दो मेजर पाथवेज हैं. वन इज डी नोवो, बॉडी में बनता है, कुछ सेल्स में नहीं भी बनता, एंड द अदर वन इज द सैल्वेज पाथवे. सो सैल्वेज पाथवे इज यूजफुल फॉर रेड ब्लड cells as well as brain, जहां de novo synthesis नहीं होती. Okay, that's all that you have to remember about the synthesis of purine. I know it looks a little complicated, guys. Give it some time. मेरी वीडियो देखकर आपको एक बेस लाइन स्केलेटन स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड योर ओन एनर्जी, टाइम एंड स्किल्स टू रिमेंबर द नेम्स. ओके, ये मैं आपको ऐसे किसी ग्लास में घोल के आपको नहीं कह सकता पी लो और याद हो जाएगा. सो दैट आई कैन नॉट डू, बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज टू मेक थिंग्स वेरी वेरी इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड ईजिली डाइजेस्टेबल बाय यू. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. अब नेक्स्ट वीडियो में होपफुली विल टॉक अबाउट कि ये जो प्यूरिन्स बन गई हैं, हाउ दे आर डिग्रेडेड. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, अपना ख्याल रखिएगा. My name is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures.